So it is just preparing it. Okay. Can you check, anyone, can you check on YouTube? Sure, sir. Let me check it. Yeah, so anybody can check it. And I can check it myself here as well. It is, yeah. Yes. So it is coming. It is coming. Great, great, great. Thank you so much. Thanks a lot. Okay. Yes, sir. The meeting is live on YouTube. So it is live on YouTube. So I'll just. It is just preparing it. Yeah. So this is for the first time that we are doing it. So I thought we should go live here as well, because it will be here as a record. Okay. Okay, so welcome you all on this very, very special webinar that we have. And the good part is it is for the first time that we have all here, and I can see you, I can talk to you. I'll be talking to you later on. Okay, so I'll take your questions as well. I'll talk to you. But before that, I would like to share my screen for a wonderful presentation that I prepared for you. Okay, and for first 45 minutes, 30 minutes or 45 minutes, I'll just go through this presentation. And later on we'll talk. Okay, now of course, as you can see, it is 3 ways to go to level next in English. But before that, I would like to share some startling facts about English with you. I would request you to mute yourself. Just check yourself that somebody is not muted. Okay, please mute yourself. So some startling facts about English. Number one, more than 1 million people speak English in the world. And India is the second largest English speaking populace. And when I say second largest, that's huge. After America, we are the second largest. Okay. And this is expected to be 4 times in the next decade. इसका मतलब ये हुआ अगले 1 दशक में, अगले 10 साल में हम दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज जो दुनिया की है वो इंग्लिश नहीं है अभी, लेकिन जहां तक इंग्लिश की बात है हम सबसे ज्यादा पॉपुलेस वाले देश बन जाएंगे, यानी कि इंग्लिश सबसे ज्यादा करके बोली जाएगी अगले 10 साल में वो यहाँ. Now this is a good thing and a bad thing. Good thing because definitely it is one language which is ruling the world now. Even the countries like Chinese, country like China, Japan, German, ये वो कंट्रीज है जो आमतौर पर इंग्लिश नहीं बोलते हैं. ओके, लेकिन वो भी बोल रहे होंगे. प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन दैट. समबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग, सो आई विल हैव टू I'll have to put some restriction there. Okay, don't write anything on the screen. Okay, don't try to write anything on the screen. Don't put anything on the screen, please. Now the question is, what is the reason? Okay, so I'll have to do that. Just a minute. Yeah. Let me erase it and please don't write anything on it now. Okay. Yeah, so the question is, why don't we talk in English? And the reason we don't talk in English is this: the conventional method of learning English. हम English ऐसे ही सीखते आए हैं. मेरा नाम रवि है, I am Ravi, या my name is Ravi, this way. Okay, ये कन्वेंशनल मेथड है इंग्लिश सीखने का, और ये मेरे साथ भी हुआ है. मेरी कहानी भी बिल्कुल ऐसी है. मैंने इंग्लिश बिल्कुल ऐसे सीखी, और अगर हम इंग्लिश को ऐसे सीखते हैं तो उसके कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस, कुछ ऑब्स्टिकल्स रहते हैं. ओके, तो आई विल शेयर माय स्टोरी इन 5 मिनट्स विद यू. मैं 5 मिनट में आपको अपनी कहानी बताता हूं. माय नेम इज विनीत कपूर. आई एम फादर ऑफ 2 गर्ल्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन एंड अ कॉर्पोरेट मैनेजर टर्न कम्युनिकेशन ट्रेनर. ओके, अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड हैविंग अ विनिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग इन लाइफ. मैं बेसिकली एक कॉर्पोरेट ट्रेनर रहा हूं, और लगभग 10 साल पहले मैंने अपनी जो मेरी एक प्लम पोस्टिंग जिसे कहते हैं, प्लम जॉब जिसे कहते हैं, उसको छोड़ के मैंने ये स्टार्ट किया. और उसका एक ही कारण था. नंबर 1, क्योंकि मेरा पैशन रहा है. नंबर 2, बिकॉज मैंने अपने साथ प्रॉमिस किया था कि एक दिन ना सिर्फ मैं इंग्लिश सीखूंगा, लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या को इंग्लिश सिखाऊंगा भी, खास तौर से उनको जिनकी जरूरत है. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डिड इट स्टार्ट? ये शुरू कैसे हुआ? This all started when I was around 21 years of age, 21 years of age. Okay, 20-21 साल का. और आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये एक जो शाय गाय आपको नजर आता है, you can see this picture here. Who is this guy? Can you tell me? ये कौन है? I think it's you. It's you, yeah, sir. Yeah, it's my pic. Yeah, it's my pic when I was around 21-22. मैं 21-22 साल का, आप देख सकते हैं कैसा था, और यहां से मैं यहां कैसे पहुंचा. So I became a national level speaker. Okay,
You can see me here. Just a minute. So please, once again, somebody is writing on the screen. Don't write because it will be quite disturbing. And yeah, I'll have to bar the person. Once we get it, we'll have to bar the person from here. Okay, please don't do that. It disturbs it. Yeah, unnecessarily. So I became a national level speaker. You can see me in the corner here. आप मुझे corner में देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए. And this was a conference actually which was conducted by the government of India along with some school. And not only that, actually, I was being interviewed. I am still being interviewed by the national level masters of their own field. Okay, these are the national level masters of their own field. Now the question is, how from that shy guy I reached to this place? So my story is very similar to perhaps many stories in India. I started with this classroom. आप देख रहे हैं कि ये classroom लगभग मेरा भी ऐसा ही था. That was my early education. पूरे क्योंकि हिंदी मीडियम था, इंग्लिश का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना टीचर इंग्लिश बोलते थे और ना हम इंग्लिश बोलते थे और कोई दिक्कत नहीं थी. 12th तक मैंने अपनी पूरी एजुकेशन ऐसी ली. और अच्छी बात ये थी कि क्लास में कोई नहीं बोलता था. कोई नहीं बोलता था तो कोई चैलेंज भी नहीं था. और हम उनसे मिले नहीं थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए थे. लेकिन एक दिन 12th करने के बाद जब मैं पहली बार कॉलेज गया, ओके, और लाइन में खड़ा हुआ था, तो मैंने अपनी लाइन में देखा कि कुछ इंग्लिश बोलने की आवाजें आ रही थी पीछे से. सो जो मेरा दोस्त पीछे खड़ा हुआ था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बताओ कि ये इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे? तो उसने कहा इसी कॉलेज में नहीं, इसी क्लास में. सो यू आर इन अ कॉलेज नाउ वेयर टीचर्स वुड बी टीचिंग इन इंग्लिश, और वहां पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे पढ़ेंगे. और ये मेरा पहला एनकाउंटर था इंग्लिश से. मैं चुपचाप उस लाइन से निकला और घर वापस आ गया और ये सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि इंग्लिश से बहुत डर लगता था. और वो डर इसलिए था क्योंकि कभी मुलाकात नहीं हुई थी इंग्लिश से. तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए और उसकी डेडलाइन जो फॉर्म जमा करने की थी वो बिल्कुल करीब आ रही थी. और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ कि यार एक छोटी सी चीज से डर कर घर बैठ जाए, क्योंकि मैंने तब ये सोचा था मैं प्राइवेट करूंगा. आई डू इट एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, मैं प्राइवेट कैंडिडेट की तरह करूंगा ये. लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. आई विल नॉट डू इट एज अ प्राइवेट कैंडिडेट. ओके. और फिर मैंने अपना प्लान भी सोचा. प्लान भी क्या था कि पहले जाके मैं फॉर्म जमा करूंगा और उसके बाद इंग्लिश सीखूंगा. तो मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया. इंग्लिश वही कन्वेंशनल तरीके से सीखना शुरू किया. Please mute yourself. Somebody is not muted. Hemant, please mute. I've done that. Okay, thank you. So मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया. डिक्शनरी लेकर आए, डिक्शनरी को पढ़ना शुरू किया, डिक्शनरी से लिखना शुरू किया, टेंसेस पढ़े एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. लेकिन कुछ नहीं हुआ. Nothing happened. Then somebody told me, one of my friends, कि तुम इंग्लिश कैसे सीख रहे हो? तो मैंने कहा मैं इंग्लिश ऐसे सीख रहा हूँ. ऐसे थोड़ी ना होता है. इट्स अ स्किल. जैसे तुम्हें गिटार बजाना, बाय द वे मैं तब गिटार बजाना मुझे बड़ा वो लगता था कि मैं गिटार बजाऊं. और गिटार बजाना तुम कैसे सीखते हो? मैंने कहा गिटार बजाकर. और कोई भी चीज, साइकिल कैसे सीखी तुमने? साइकिल चलाकर. तो अगर गिटार बजाने से आता है, साइकिल चलाने से आता है, तो इंग्लिश बोलना तुम्हें लिखने या पढ़ने से कैसे आएगा? तो भाई इंग्लिश बोलना बोलने से आएगा. तो फिर क्या था, बस किसी तरह से तलाश जारी हुई. अपने एक दोस्त के साथ एक दिन पहुंच गए हम इस तरह के एक ग्रुप डिस्कशन में, जहां पर एक मैम डिस्कशन कराया करती थी. ओके. मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूं बाय द वे, और वहां पर सब ठीक ठाक चल रहा था. लेकिन वो सब अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे थे जो ग्रुप डिस्कशन किया करते थे, और मुझे इंग्लिश के 4 सेंटेंस नहीं आते थे बोलने. और अचानक मैंने कोई एक ऐसा वर्ड पूछा कि उनको लगा कि इसका लेवल इस लेवल से मैच नहीं करता. उन्होंने मैम से रिक्वेस्ट किया, मैम प्लीज यू कैन टीच हिम सेपरेटली, क्योंकि इनका इंग्लिश का लेवल हमारे लेवल से मैच नहीं करता है. तो अगले दिन मैम ने मुझे कहा कि देखो विनीत, ऐसा ऐसा है और ये लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आपको अलग पढ़ाया जाए. तो मुझे पहली बार लगा कि इंग्लिश की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, एक तरह से बाइकआउट सा हुआ. सो मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया, please mute yourself, everyone, please mute yourself. Yeah, there is some voice coming, please mute yourself. अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट का बटन दबाकर. कुछ आवाजें आ रही हैं पीछे से. या और जो लोग YouTube पर इसको देख रहे हैं, तो आप उसके नीचे ये एक लिंक भी मिलेगा. आप हमारे, इस समय हम लाइव हैं एक वेबिनार में. आप हमें वेबिनार में लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, इस समय ये YouTube पर भी लाइव चल रहा है. तो मैंने कहा, मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम मुझे सेपरेट बैठने दीजिए और मैं सिर्फ इनकी आवाजें सुनूंगा, ये बोलते कैसे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था. मैंने उन्हें धीरे धीरे अपना दोस्त बनाया
और वहां से मेरी इंग्लिश की शुरुआत हुई। और दो दोस्त और मिल गए, उनके साथ हम रोज इंग्लिश बोला करते थे, गलत बोलते थे लेकिन बोलते थे, अपनी चिट को एक्सचेंज करते थे। लेकिन मुझे याद है कि एक कैफे है मेरे शहर में, कैफे आज भी है, प्रभात कैफे के नाम से, वहां पर बैठा करते थे 1 घंटा। उसका जो वेटर था उसको हम टिप दिया करते थे 5 रुपए की उस समय, और वो हमें कुछ नहीं कहता था, हम कहते थे दोबारा चाय मत लाना, ये तुम्हारा है। एंड और वहीं पर बैठकर हम इंग्लिश सीखी है हमने, बोल बोलकर, बिना किसी टीचर के। वुड यू बिलीव दैट? ये बात दूसरी है कि मेरे टीचर मुझे बहुत बाद में मिले जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाना सिखाया। ओके, तो यहां तक तो कार्डिगी बिल्कुल ठीक थी, इंग्लिश आ गई थी अपने को, और उसके बाद इंग्लिश पढ़ाने लगे थे मैं अपने टीचर के साथ ही। जब मेरी जॉब लगी उसके साथ साथ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। हम लगभग फ्री पढ़ाते थे अपने कॉलेज, अपने शहर में, और हजारों बच्चों को पढ़ाया। ओके, जस्ट अ मिनट, देयर इज समबडी एक्चुअली हु इज I'll have to change this because somebody is just creating a nonsense, and I'll have to remove that person. Okay. Sir, you can stop this writing option from the top left. There is an option. I'm just trying to find that only. From annotate I can do that. And just a minute, I'll find out disable annotation for others. Yeah, I've done that. Yeah, thank you. Okay, and I would also request you to mute yourself. तो यहां तक बिल्कुल सही था। उसके बाद मेरी जॉब लगी, मैं जॉब में चला गया, और कॉर्पोरेट लेडर जिसे कहते हैं मैं उसको चढ़ने लगा धीरे धीरे। वो जो हाई फ्लाइंग जॉब होती है, तो मैंने लगभग 8 साल तक अपने सर के साथ, टीचर के साथ पढ़ाया, 8-10 साल तक। और मुझे इंग्लिश का बहुत शौक था उस समय, पढ़ाने का बहुत शौक था। मैं जॉब के साथ भी पढ़ाता था, शाम को, दिन में जॉब करते थे, शाम को जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे होता गया, ऊपर जाते गए, कॉर्पोरेट में आ गए, एबीएम बने, फिर रीजनल मैनेजर बने, फिर जोनल मैनेजर बने, एक बहुत बड़ी टीम को हैंडल करने लगा। और एक दिन मैं अपने टीम के साथ ट्रेन में जा रहा था, और अचानक मेरे पास एक मैसेज आया जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। और वो मैसेज था, सर इज नो मोर, द टीचर दैट आई लव मोस्ट, आई लॉस्ट हिम। और वो मुझे अक्सर कहा करते थे, विनीत, you are in the wrong profession. You are not born to do this. You are born to teach, train and touch others, change their lives. उसी दिन मैं अपना सामान लेकर उतरा और मैं अपने घर वापस गया, क्योंकि वो भी उसी शहर से थे। और मैंने तब वहां डिसाइड किया, I'll not go back to my company. And believe me, I was at a very good position, very comfortable, very good position. और मैं उस कंपनी में टोटल मैंने उस सेक्टर में 17 साल काम किया। आप समझ सकते हैं 17 साल की जॉब कितना मुश्किल होता है। बट देन आई चेंज एवरीथिंग एंड स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश 10 years बैक। मैं 10 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। ये कहानी, यहां से मेरी इंग्लिश कहानी की पढ़ाने की शुरू हुई। एक बच्चे से स्टार्ट किया था और आज लाखों लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन 2 चीजें जिसने मेरी जिंदगी को बदला, वो थे ये, डिसीजंस एंड एक्शन। एंड टुडे इफ आई कैन गिव यू समथिंग, आई गिव यू जस्ट वन थिंग। इफ यू हैव पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, and if you think, and everybody has got a power of decision making, याद रखिए, जब आप डिसीजन नहीं भी लेते हैं तो भी आप डिसीजन लेते हैं। एंड पावर ऑफ एक्शन, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, और मैंने ये करके पाया है। सो द क्वेश्चन इज, आर यू एन एक्शन टेकर? इफ यू आर एन एक्शन टेकर, रेज योर हैंड। यू आर एन एक्शन टेकर, रेज योर हैंड इफ यू आर एन एक्शन टेकर। yes, great. So we have a lot of people raising hands. So Jyoti, Khushi, Yuvraj, Hemant, and a lot of people said ki yes. Great. Yeah. So if you are an action taker, then definitely you'll get a lot of things from here. And I would request you कि action जो आज लेना है, Lucky, Nuruddin, Jyoti and everyone else, thank you so much. आज से लीजिएगा. Take decision today and take action today. And that's very important. So today I'm going to tell you 3 keys to speaking English fluently and 3 keys to going to level next. हमने 2 दिन आपको बिल्कुल डिफरेंट कराया। अगर आपने वो 2 दिन की हमारी वीडियोस नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस हैं जहां मैंने 2 दिन में बूट कैंप में आपको बताया कि हम कैसे कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने सच में इंग्लिश सीखना है और इस लेवल पे पहुंचना है तो आपको करना क्या है। What do you need to do? And if you do this, believe me, you can go to level next. It takes time. ये याद रखिएगा। अगर मैं कहूं कि ये कोई जादू है, किसी कोर्स को आप अटेंड करके ये कर लोगे, ऐसा नहीं है, इसमें समय लगता है। So I'll give you 3 keys only. और अगर आप 3 keys को समझोगे तो आप सच में कुछ पालोगे।
Now the key number one is always begin with the end in mind. और इसका तरीका क्या है? I call it the power of imagination. मैं इसको बोलता हूं the power of imagination. ये power of imagination है. Power of imagination का क्या मतलब हुआ? Power of imagination का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, when I was learning English, तो मैं क्या किया करता था? Okay, I'll tell you मैं क्या किया करता था. मैं अपने आप को उस जगह रख कर देखता था. तो मैं ऐसे देखता था, I'm on a stage and I'm delivering a lecture in English. And people, they are applauding me. They're giving me standing ovation when I finish my lecture. Now this gave me so much of power that I used to have goosebumps. मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे. मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे उस समय. यकीन मानिए. And उसका कारण ये था कि most of the times we don't begin with the end in mind. Neetu, please mute yourself. Yeah. We don't begin with the end in mind. We begin with the obstacles in mind. हम शुरुआत कैसे करते हैं? मैं कल नहीं, अभी 2 दिन पहले अपने एक बहुत पुराने मेरे मित्र हैं, उनके पास गया अपनी बुक देने के लिए. उनसे बात कर रहा था, तो मुझसे बड़े हैं वो, तो वो रिक्वेस्ट करने लगे कि विनीत, अब उनकी एक अपनी कंपनी है. ओके, शेख सादिका प्लीज म्यूट योरसेल्फ. शेख सादिका प्लीज म्यूट योरसेल्फ. या, थैंक यू. सो उनकी अपनी एक कंपनी है, तो वो कहने लगे कि कभी आकर आप हमारी कंपनी में लोगों को एड्रेस कीजिए. तो मैंने कहा कि सर, आपकी तो पूरी टीम है, आप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, कर सकते हैं. कह लगे नहीं. तो तब उन्होंने मुझे बताया, आपको मालूम है, आज से 8 साल पहले जब मैंने कंपनी शुरू की थी, और वो एक कंपनी में जीएम थे, मेरे से अच्छी पोजीशन पे थे, और तब उन्होंने छोड़ा. तो कहने लगे कि एक दिन मैं आपसे बात कर रहा था, अपने फोन पे बात करते करते, तब वो अहमदाबाद में थे. तो मैंने आपसे कहा, तो मैं बात कर रहा था कि सर आप अपनी कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट करते. सवाल है. मोनिका प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मोनिका प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मोनिका, या, थैंक यू. सो मैंने कहा कि आप अपनी कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट नहीं करते. तो उनका जवाब आया, अगर नहीं चली तो. और मेरा जवाब पता क्या था? मेरा जवाब था, अगर चल गई तो. एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि आप इससे क्या शुरुआत कर रहे हैं अगर नहीं चली तो. और तब मैंने उनको बताया था कि सर, जिंदगी में 2 ही चीजें होती हैं. सबसे बड़ी चीज होती है डाउट. वी ऑलवेज बिगिन विद द डाउट. अगर नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं मिला तो, अगर इंग्लिश नहीं आई तो मैंने उनको कहा कि आज के बाद होप से शुरू कीजिए. अगर आ गई तो, अगर चल गई तो. एंड दिस इज व्हाट आई विल टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो. बिगिन. और ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप मुझे बताएंगे डाउट का एंटीडोट क्या है? अगर डाउट की काट क्या है? अगर डाउट आए तो उसकी काट क्या है, बताओ. कैन समबडी टेल मी? Hope. Hope. I think hope, sir. Very good, Danish and Neetu. Very good. This hope. तो आपको कभी भी किसी भी चीज पर डाउट हो तो होप का दामन थामिए. होप आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगी, क्योंकि होप हल्की होती है, डाउट भारी होती है, वो आपको दबाता है. You getting my point? And that's very, very important. Begin with the end in mind. And every new beginning that holds a magic in it for you. There's a magic. You gotta trust that magic. Most of the time we say magic doesn't happen. मैं ये कहता हूं, जादू इसी दुनिया में होते हैं, वो बाहर की दुनिया में नहीं होते. मैं अपने आप को आज यहां पर बैठकर देखता हूं. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. somebody is not muted. Please mute yourself. तो मैं आज अपने आप को यहां पर बैठ के देखता हूं. ये आदमी जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं. ये आदमी, मैं इसको जादू समझता हूं. इसमें समय लगा, लेकिन ये जादू है. मेरे लिए जादू है, क्योंकि मुझे, जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, आज वो ये बैठकर ये बातें कर रहा है. और आज ये अगर हम लाखों लोगों को पढ़ाते हैं तो मेरे लिए जादू है. लेकिन इसी दुनिया में होते हैं जादू. ओके. और याद रखिए, आपका जो सबसे बेहतरीन काम है वो आपके आगे है, आपके पीछे नहीं. अभी वो हुआ नहीं है. लोग अक्सर ये कहते हैं कि वो हो गया मेरा. आपका सबसे बेहतर, मेरा सबसे बेहतर अभी आना बाकी है. मैं हमेशा ये कहता हूं, दैट इज होप. अभी मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया. माई बेस्ट इज येट टू कम. योर बेस्ट इज येट टू कम. आपका बेस्ट आना भी बाकी है. एंड द अदर थिंग यू गॉट टू रिमेंबर इज दिस. All things are created twice. हर चीज
Neetu, please mute yourself. Neetu, please mute yourself. Neetu, please mute yourself. Neetu, can you hear me? Neetu, it is not there, I think. That's the problem with the meetings actually. Sometimes वो गलती से रह जाता है. Neetu, please mute yourself. Okay, sir. Thank you. Okay. So अभी भी नहीं हुआ है. अच्छा, all things are created twice. हर चीज जो है I'll have to actually, I don't want to debar anyone, but there is something wrong. Yeah, there is some voice coming from the background. पीछे से आवाज आ रही है. अपने अपने म्यूट बटन चेक कर लीजिए बस. Okay, yeah. Okay, so all things are created twice. हर चीज याद रखिए दो बार होती है. पहले यहां फिर वहां. ये कभी ऐसा नहीं होता पहले वहां हुई और फिर यहां हुई. जो आप सोचते हैं वो होता है. ओके, जो आप सोचते हैं वो होता है. तो इसका ध्यान रखिएगा. Somebody is not muted. Please mute yourself. Yeah, I'll have to check it. I'll have to check it. Just a minute. Give me 2 minutes. Somebody actually. Neetu is muted. Who's the next one? Just a minute. Let me check. Shobha, I think. Shobha is not muted. Shobha, you are not muted. Shobha ji. Shobha ji. Sir, if you want, you can put everyone on mute mode for a while. I wanted to do that, but I'll yeah. So I'll have to go back there and just a minute. इसमें नहीं है. I'll have to stop sharing and then I'll do that. Come here as well. I'll put her in waiting room. Let me check others also. The voice is coming from someone else. That is Shama Parveen. Shama, please mute yourself. Okay, I'll have to otherwise put you in the. Yeah, Shama, आपने इसको म्यूट पर रखिए. आपके इसमें से आवाज आ रही है, वरना मुझे वेटिंग रूम में आपको रखना पड़ेगा. या थैंक यू. आई थिंक इट्स डन. या ग्रेट. वो कई बार रह जाता है. नो प्रॉब्लम एट ऑल. अभी भी किसी से आ रही है. या एवरीवन इज म्यूटेड. आई होप नाउ. ओके, थैंक यू. So everything is created twice, first here and then there. So you gotta believe that. You gotta believe that कि ठीक है, everything is created twice. तो पहले मैं यहां सोचूंगा और फिर वहां सोचूंगा. और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, always try to start small but think big. We do opposite thing. We think small and try to start big. So when we think small, we try, even the small thing becomes big for us. तो आप क्या कर सकते हैं? There are two things. One is purpose, the other is goal. Like, what is my purpose? My purpose is I want to go to Delhi from here. But what is my goal? My goal is, first of all, I'll book my ticket. So if I book my ticket, there are chances, 50% chances are that on that day, I'll start my journey. Isn't it so? And this is what I say. कि आपने करना क्या है? बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर क्या है? मुझे दिल्ली जाना है और किसी के साथ मीटिंग करनी है. बड़ी पिक्चर. गोल क्या है? छोटी पिक्चर क्या है? एक महीना पहले मैं चेक करूंगा कौन कौन सी ट्रेन उस समय मुझे दिल्ली पहुंचा देंगी और मैं उस ट्रेन की बुकिंग करता हूं. So what I did, I thought big, but I started small and I felt confident. Yes, I'll definitely reach Delhi on that day, on that designated day. मैं उस दिन दिल्ली पहुंचूंगा. ये बड़ी पिक्चर है. तो आपने हमेशा ये करना है. तो अगर आप ये काम करेंगे, मेरी पहली की आपसे यही है, always begin with the end in mind and keep these things. Keep these things in mind. Why do I say so? Because all things are created twice. Magic happens in this word only, and your most important work lies ahead of you, not behind you. अभी आपने कुछ किया नहीं है. So if you start small and think big, then definitely you will reach there.
Let's come to key number 2, दूसरी key. My second key is people ask me, sir, who will correct me? मैं अगर मुझसे पूछें कि मुझे किसने करेक्ट किया, किसी ने नहीं. मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे समय में YouTube नहीं होता था, हमारे समय में कुछ नहीं होता था. हमारे समय में बस एक चीज होती थी कि आपका पैशन, जज्बा, और आप वो कर लेते थे. बहुत से लोग यहां पर ऐसे होंगे जिन्होंने साइकिल चलाना अपने आप से सीखा होगा. उनके, हाँ, कोई ना कोई पास में रहा जिसकी साइकिल रही होगी, उसने पकड़ लिया होगा. बट जनरली आप देख देख कर सीख लेते हैं. बच्चा बोलना कैसे सीखता है, चलना कैसे सीखता है, उसको कोई नहीं सिखाता. देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटो करेक्शन. द की नंबर 2 इज लर्न द आर्ट ऑफ ऑटो करेक्शन. ये कमाल की आर्ट है ना. ऑटो करेक्शन क्या होता है? ऑटो करेक्शन का मतलब ये है कि आपका दिमाग अपने आप पढ़ता है. मैं आपके दिमाग को एक चीज दिखाता हूं, इसको जरा पढ़ के बताइए कौन इसको पढ़ सकता है. ये एक सेंटेंस है. रीड दिस. हु विल रीड? वन पर्सन कैन रीड. या ट्राई इट. Sir, may I, sir? This is a sample sentence to test your brain's ability to correct mistakes. Very good. Who is this? Sir Hemant Porwal. Hemant, great. Hello. Anyone? Yeah, Kavya. Sir, actually we Indians, what we do, I think first letter and last letter we see, and we'll just start So reading. it's not with Indians only. Don't give this credit to Indians only. It's with all the brains. Okay, sir. You know, Sorry all the for brains. intervention. Yeah, no Okay. problem. Yeah. Can So, I try, sir? yeah, Danish. This is a simple sentence to test your brain's ability to correct mistakes. This is a sample sentence. Okay, it's not a simple, it's a sample sentence. Yes. And now, Sir. what happened was, आप मैंने जिसने भी सेंटेंस को पढ़ा, इसमें सब में गलतियां हैं. ज्यादातर में 90% वर्ड्स गलत हैं. एबिलिटी गलत है. बस 2 अगर दोनों देख लें, इज और ए, यही सही है, बाकी सब गलत हैं. लेकिन आपके दिमाग ने उसको ऑटो करेक्ट किया. अब आप कहेंगे सर ये क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हमें सेंटेंस की स्पेलिंग मालूम है, इससे फर्क नहीं पड़ता. आपको भी ये मालूम है तो आपने ये पढ़ लिया. अगर आप इससे नीचे की बात करें तो आप उसको भी पढ़ लेंगे अगर बच्चे को देखें. सो बच्चा कैसे सीखता है? मैं अभी जो उस दिन आपको बता रहा था कि वो तो वर्ड्स को इजाद करता है, वो तो नए नए वर्ड्स बनाता है. वो पानी को मम कहता है. मम कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि उसको मम्मा से लेना है और उसकी माँ उसकी लैंग्वेज को समझती है. एंड दैट्स व्हाई आई से ऑटो करेक्शन इज अ पावरफुल टूल, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट इन लाइफ ऑल्सो. आई टेल यू व्हाई. मैं आपको बताता हूं क्यों. मैं आपको 2 पिक्चर दिखाता हूं. ओके, बताइए. एक ब्रेन है, एक मिसाइल है. विच इज मोर पावरफुल, ब्रेन और मिसाइल? The brain, sir. Brain, Brain. Absolutely, it's brain. brain, sir. Yeah, absolutely. So it is a no-brainer. It's a brain. The reason is because this is the brain which made the missile. और उसने मिसाइल को ये तक बता दिया उस ब्रेन ने कि तुम्हें काम कैसे करना है. आपको गाइडेड मिसाइल बताता हूं मैं कैसे चलती है. तो मिसाइल को छोड़ा जाता है, गाइडेड मिसाइल को, और उससे कहा जाता है कि तुमने यहां से 350 किलोमीटर पे एक टारगेट को हिट करना है जो नॉर्थ में है 37 डिग्री पर. ओके, शमा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यू आर नॉट म्यूटेड. शमा परवीन, शमा यू आर नॉट म्यूटेड प्लीज. या just a minute. I'll mute. Yeah. Now she's muted. Thank you. So what happens is, yeah. Can you see my video here? क्या आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है ऊपर? नहीं. Yes, sir. Sir, Yes, sir. ओके, चलो म्यूट योरसेल्फ. सब लोग म्यूट करना जो भी बोले थे, कई बार हम भूल जाते हैं. शेख सादिका म्यूट योरसेल्फ. शमा प्रवीण म्यूट योरसेल्फ. या, थैंक यू. सो गाइडेड मिसाइल कैसे काम करती है? गाइडेड मिसाइल में वो एंटर कर दिया जाता है टारगेट, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि गाइडेड मिसाइल गलती नहीं करती है. वो उसको 37 डिग्री पे जाना है तो वो 35 डिग्री पे आती है, कभी कभी 40 डिग्री पे जाती है, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम है वो उसको करेक्ट करता है, विच इज कॉल्ड ऑटो करेक्शन. सो वो गाइडेड मिसाइल जब उसका सिस्टम उसको बताता है तुम गलत पाथ पर जा रही हो, तुमने 37 पे नहीं जाना है या 47 पे नहीं जाना है, 37 पर जाना है, तुम नॉर्थ ईस्ट जा रही हो, तुम्हें नॉर्थ जाना है या वेस्ट जाना है,
The same auto correction is in our brain. हमारा ब्रेन, हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा. हम मशीन पे ज्यादा विश्वास करते हैं. जो ऑटो करेक्शन आया है स्पेलिंग्स का, वो उसका एक नुकसान ये है कि हम मशीन पे ज्यादा विश्वास करने लगे हैं. पहले हम अपने ब्रेन पे विश्वास करते थे. But I would say, as far as English is concerned, you gotta believe in this art of auto correction, and you gotta be this, a self-guided missile. और अगर आपको ये विश्वास हो गया कि मैं कर सकता हूं अपने आप, then you definitely can do that. You definitely can do that. Okay. Now let's come to key number 3. और ये एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि अगर मुझे सबसे ज्यादा फायदा किसी चीज ने पहुंचाया वो ये है. कल मैंने आपसे कम्युनिटीज की बात की थी कि you should make communities. आपको कम्युनिटीज बनानी चाहिए. And why community is so important? I'll tell you something else today. Let's go beyond community. Darshan, please mute yourself. Darshan, please mute yourself. Yeah, Darshan, can you mute yourself? Thank you. Okay. So there is something called ecosystem. Build an ecosystem. You see, right now you are a part of an ecosystem. आप एक ecosystem के हिस्से हैं इस समय. Why? Because your ecosystem brought you here. You are a part of an ecosystem. Now this ecosystem may be external right now. Why this ecosystem is external? Because आप YouTube से मेरे पास आए हैं. आप कहीं बाहर से YouTube पर आए, YouTube से चैनल पर आए, उस चैनल से यहां पर आए. Now whatever be the case, but you because you wanted to learn English, and that's why this ecosystem pulled you in. What if you start your own ecosystem? You build your own ecosystem. Now the problem is we always ask how. I always say start with why, not with how. How is the domain of universe. ये उसका काम है, वो आपको गाइड करेगा. आप यहां पर भी कैसे आए, वो आपको रास्ता दिखाया गया, तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा. आपने सिर्फ क्या सोचना है, मुझे जरूरत क्यों है. Why ecosystem is important. Why should I build a community that I talked about yesterday, or why should I join a community? And the reason is when you join a community, you don't only give, you receive a lot. कल मैंने आपसे कहा था कि I am sum total of the people I have met in my life, and you are the average of 5 people around you. So this is what and how people impact your life. And if you create the right kind of community or ecosystem, you benefit a lot. Should I tell you how I got benefited? Look at this. This is my pick. Okay. So आपको नीचे नाम भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा. ये हमारे जो दोस्त है मिस्टर इमरान, उन्होंने मुझे पिक बहुत साल पहले भेजी थी. So Mr. Imran and I, we were very close to sir. बीच में जो नजर आ रहे हैं आपको, वो मेरे टीचर रहे हैं. अभी वो unfortunately is no more. और इन्हीं की वजह से मैं आज इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. He used to be such a wonderful teacher. I've not come across a better teacher than him. He was a crowd puller. ये उस समय की बात बता रहा हूं मैं. और अभी भी जब लोग क्लास अटेंड नहीं करना पसंद करते थे, मैंने इनसे कभी कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ा हूं. मैंने इनसे पढ़ाना सीखा है, पढ़ना नहीं. इंग्लिश मैं पहले सीख चुका था. इन्होंने मुझे बताया कि पढ़ाते कैसे हैं. तो मैंने जब ये सीखना शुरू की इंग्लिश, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई. मुझे याद है कि मैं किताब पढ़ रहा था, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. और नेपोलियन हिल ने उस किताब में कोर ग्रुप की बात की है. अगर आपने वो किताब पढ़ी है, वो मेरे बात स्ट्राइक की. और मुझे लगा कि मुझे उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो मास्टर हैं. और मुझे एक ही मास्टर नजर आया अपने शहर में. और मैं उनके बस इनका पता करते करते इनके घर तक पहुंच गया मैं. एंड देन वी हैड अ लॉन्ग चैट. उसके बाद ही वाज सो नाइस, ही वाज सो वेलकमिंग ऑलवेज. तो उन्होंने कहा कि लुक विनीत, आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस. मैंने एक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और यहाँ पर हम बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं शाम में, और बिल्कुल अनकन्वेंशनल तरीके से. और हमने वहां पढ़ाना शुरू कर दिया. हम तीनों लोग पढ़ाया करते थे और हमने 10 साल तक लगभग ऐसे ही पढ़ाया. उसके बाद हम अलग अलग हो गए, इसलिए क्योंकि आप तो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे, मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं कॉर्पोरेट में चला गया था. एंड मिस्टर इमरान ऑल्सो, ही मूव्ड ऑन.
But what I learned from these masters, and especially sir, actually, Imran and me, both of us, we learned a lot from him. बहुत हमने सीखा. Mr. Imran became a principal of a college later on, okay? और मैं इधर चला गया था. But हमने बहुत सीखा. और इसीलिए मैं आपको, अगर एक राय आप मुझसे मांगे, तो मैं आपको ये देना चाहूंगा कि कम्युनिटी बनाइए, अपने आसपास मास्टर्स को ढूंढिए. आज तो ऑनलाइन है आपके पास जो आपको गाइड कर सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन. Get attached to them somehow. Hold on to them. They'll give you a lot. And there are good masters. आपके आसपास देखिए, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई ना कोई ऐसा होगा कि जो आपको गाइड कर सके. और अगर आपके पास कुछ है तो बिना किसी उसके दीजिए. आज मेरे पास इतने सारे लोग इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि मैंने पहले उनसे कुछ मांगा नहीं, मैंने दिया और मुझे बहुत कुछ मिला बदले में. आपको बड़ी हैरानी होगी, मैं ऐसे जाकर लेक्चर, ये जो मैं आप देख रहे हैं, आई वेंट टू डिफरेंट कॉलेजेस. तो मैं लगभग 15 कॉलेज के पास गया और वो कॉलेज मुझे फ्री में बुलवाने को तैयार नहीं थे. मतलब मैं तब चार्ज नहीं करता था. वुड यू बिलीव दैट? जब मैंने जॉब छोड़ी अपनी, तो मैंने कहा कि ये बच्चे कहां से आएंगे. मैं उसमें विश्वास नहीं करता ऐड करने में, और ये किया. मैं आज भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, अगर आपने देखा हो. मैं एक चीज में विश्वास करता हूं कि अगर आप वैल्यू देंगे तो वैल्यूएबल पीपल विल कम टू यू. एंड आई गेव अ लॉट ऑफ वैल्यू. तो किसी ने मुझे ऐसे ही कहा, ठीक है आप हमारे कॉलेज में बोल सकते हैं, दे सकते हैं, और मैंने वहां पर दिया एंड दे लाइक्ड अ लॉट. तो बच्चों ने जाकर वहां के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया कि सर ये अगर सर हमारी क्लासेस यहाँ पर, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड टीचिंग इन these colleges. So this was another community that I made. Okay, I'll show you another community. Now this is another community. We made a huge community in Lucknow. मैंने एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, and I taught thousands and thousands of students. और ना सिर्फ मैं इंग्लिश की बता रहा हूँ, I formed communities after communities. This is a community of our startup group. हमारा लखनऊ में एक स्टार्टअप ग्रुप है जिसको मैंने यहाँ पर बनाया, और वहां पर हम कुछ नहीं लेते. आपको बड़ी हैरानी होगी इस क्लब का, जिसमें सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, IITians हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हैं इनमें से कहीं. लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी कि हम अपनी कॉफी या वो जो खर्चा आता था वो कैसे चलाते थे. वी वुड गो डच. बिल आता था, एक बंदा पे करता था और हम सब लोग डच करते थे उसको, यानी जितना आए सब में डिवाइड कर लो. बट वी यूज्ड टू गिव अ लॉट एंड आई गॉट अ लॉट. एंड देन वंस यू गेट इट, शो अदर्स व्हाट यू कैन डू. शो अदर्स. शर्माइए मत. आपके पास क्या है, जाइए बताइए लोगों को. दिस इज व्हाट यू, व्हेन यू कंट्रीब्यूट एग्रेसिवली, people notice and they call you. So YouTube called me 2 years back and said ki sir, you are one of those teachers that we want to honor, and you can see me in a crowd. Okay, so there were around 100 people and they were doing something different. So even YouTube took notice of us. And then of course the masters of the game, they took notice of it, ki what we are doing. So this is the result of ecosystem. If you get these people around, build a bond, find what they are doing, learn from them, and you will be successful one day. And this is my level next. You know what is level next? Level next is find out who are the people who can make an impact. These all people that you see here with me, okay, there are some people, they are highly successful people. They are highly successful people. But I reached out to them. Why? Because I wanted to learn from them. And then I gave back. I gave back a lot. So ultimately, when we talk about the problem, it boils down to this. If I ask you, do you have a problem? And you say no, then no worries. If English is not a problem, no worries. You will learn English. If English is a problem, if you say yes, can you do something about it? If the answer is yes, then why worry? You'll do something about it. And if the answer is no, why worry? You can't do anything about it. So it's all your perception. What do you think about this? So I just wanted to tell you all 3 keys that you need to build. But the best key that I would say, the first key was begin with the end in mind. The second key was autocorrection, the power of autocorrection. But the third key is the most important one. Build a community, an ecosystem around you, or be a part of that. There are ecosystems working in this world. Find out where are they. And if you're ready to be transformed, I'll take 5 minutes
just to talk about my ecosystem. We have another ecosystem. Okay. उसके बाद मैं आप सबसे बात करूंगा आज मैंने सेशन ये इसीलिए रखा था क्योंकि अब मैं आप सबसे बात करना चाहता था. So I'll give you maybe half an hour, 15 minutes, 20 minutes. So I'll take 5 minutes and I'll talk about it. I won't talk much about my ecosystem today. Okay. So I'll take 5 minutes and talk about it. This is actually one of the courses that we run, English Blueprint Bundle. And again, this is not a course. It's an ecosystem. We don't talk much about it on YouTube. आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मैं बात करना पसंद नहीं करता हूँ इसके बारे में, इसलिए क्योंकि ये हमारे दिल के बहुत करीब है और ये बहुत सेलेक्टेड भी मैंने इसको रखा हुआ है. हम कभी ऐड नहीं करते, कभी बाहर बताते नहीं है. But yes, it works for everyone. If it works for professionals, we have a lot of professionals here. We have a lot of teachers, wannabe teachers, students, businessmen, and housewives. There are a lot of housewives there. Okay, some are here itself. कुछ को मैंने देखा था, वो जो बहुत सारे इसमें हैं जो हमारे इसके सिस्टम के हिस्से हैं ऑलरेडी. Okay, and they know what we do. So it's actually a part of 7 courses. तो आप जब बाहर पूछते हैं कि सर इसमें क्या क्या है, तो मैं आपको एक 5 मिनट इसका ओवरऑल वो दे देता हूँ. ये एक हमारा पहला कोर्स है, विनिट इंग्लिश ब्लूप्रिंट, जहां पर आप अपने इंग्लिश की शुरुआत करते हैं. So it helps you remove your hesitation, you set goals and all that. Okay, and it is very very valuable actually for starting up. ये जो कोर्स है ये उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं. इसके बाद हमारा एक और कोर्स है एडवांस इंग्लिश लर्निंग सिस्टम. ये जो मैं आपको कोर्सेज दिखा रहा हूं ये एक बंडल के हिस्से हैं. ये ध्यान रखिए कि ये 7 कोर्सेज सभी के सभी आपको एक बंडल में मिलेंगे, इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल में. So there are 7 courses. The first course is this. So like we have this bundle, English Blueprint Bundle, then there is advanced bundle, Advanced English Learning System. Okay. So we have this, okay, Vinit English Blueprint. इसी का एक हिस्सा है Tenses Power Code, जिसमें हम tenses को सिखाते हैं बहुत ही practical तरीके से. And you can see the value of all this. It is quite valuable, by the way. Okay. Winning Start Challenge, where you can make a start. यहाँ पर आप you go deep. Okay. और हम ये सब चीजें इसमें सिखाते हैं. And then we have a course, Social Media Mastery. By the way, I'm going to replace this course with vocab building. तो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वो vocab building वाला कोर्स मिलेगा. तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया के साथ साथ हम एक vocab building का कोर्स इसमें डालें, तो इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं उससे. ओके, आई एम वर्किंग ऑन दैट. एंड देन वी हैव इनर सर्कल वॉल्ट. ये हमारी सारी लाइव क्लासेस है. आपको मेरी सारी पास्ट की लाइव क्लासेस जो मैंने इनसाइड ली थी, याद रखिए जो हम इसमें पढ़ाते हैं वो यूट्यूब में नहीं पढ़ाते. जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं वो यहाँ नहीं पढ़ाते. वी गो क्वाइट डीप हियर. ये लाइव क्लासेस मेरी एक हफ्ते में 2 होती हैं. एंड यू कैन टेक 2 लाइव क्लासेस एंड देन यू कैन वॉच इट एनी टाइम. और इसकी रिकॉर्डिंग सबकी अवेलेबल रहती है. ओके. एंड देन द 6th वन इज आवर कम्युनिकेशन स्टार्टअप चैलेंज. ये इसमें हम डेली यूज की आपको इंग्लिश कैसे बोलनी है, कैसे करनी है, ये सब इसमें सिखाया जाता है. ओके. बट वी हैव एडेड अ स्पेशल बोनस फॉर एक्शन टेकर्स, एंड द बोनस इज दिस, इज अ फ्री कोर्स ऑफ 11 आवर ड्यूरेशन. तो हमारे यहाँ कोई भी आता है तो उसको ये कोर्स करना पड़ता है सबसे पहले. ओके, इस कोर्स में. सो यू विल हैव टू डू दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड इट इज फॉर 11 आवर्स. पहले 11 दिन उसको यही पढ़ना है. एंड आई एम गिविंग दिस एब्सोल्युटली फ्री टुडे. ओके, ये बिल्कुल उसके साथ फ्री मिलेगा. सो वी लुक एट व्हाट यू गेट एक्चुअली इन दिस इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल इज दिस. सो अगर आप उसकी वैल्यू देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट 44,000. And I know it's not affordable. It's very, very difficult for anyone to afford that. So what we have done is we have put the value to this. So the actual is 7,999. But if you like gifts, I've got a special price for you. It's not 7,999. And this is valid for a very, very limited period. By the way, we are going to increase the price of this. So it is available for 5,499. 5,499. So you'll always get it 5,499 until we increase the price. Okay. But if you like surprise gifts for all of you for a very limited period, for next maybe 45 minutes, क्योंकि मैं आपसे आज बात भी करूंगा, वैसे हम 30 मिनट का देते हैं. I'm giving a special price for all the courses. So all the courses, please mute yourself. Mute yourself. Mute yourself. Somebody is speaking. संगम. Sangam, please mute yourself. छोटी बड़ी Sayyam, 10 रुपए. Sayyid Samir, please mute yourself. Please mute yourself. देना. Just a minute. Let me mute it. Yeah. Okay. So
so this we are giving it for next 1 hour maybe, because I'll be talking to you as well, for only 4,999. Okay, so you'll get it for only 4,999. Yeah. So you've got two choices: do nothing or take a leap of faith. Your time starts now. So what you have to do is, let me tell you, those who want to be a part of our ecosystem and be the community, and you want to get in, you can start your journey now. Okay, so you can buy it from this link. So this is the link. So you go to Google, anywhere, just type bit.ly/English bundle. It will take you there. मैंने उसका price change कर दिए हैं, लेकिन ये price 1 घंटे के अंदर change हो जाएगा. Okay, because we never give discounts. So if you ask me for discount tomorrow, you won't get it. You never get it. जो लोग already हैं इसमें, उनको मालूम है. We never we give discounts for 30 minutes sometimes. Okay. So if you want to get that, it is at highly discounted price that you can get it. Okay. So if you want to be part of the ecosystem, you buy it now. That's just the right time. And once you buy it, you will get a receipt, payment slip. It is all automatic. Send it there and we will guide you. हम आपको इसके बाद guide करेंगे. Okay. And you can start your journey of English learning from today. You can be a part of my ecosystem. When you get inside, then you learn English. Outside, you don't learn English. Okay. Outside, you get knowledge. But when it comes to spoken English, when you get in, because we have a lot of things. When I say ecosystem, why I say so? We have talk rooms, for example. So I did a Zoom meeting yesterday where Sagita Palkar is here. Actually, she could not get a chance yesterday because there were so many people but I wanted to make everybody speak yesterday. For 1.5 hours, everybody spoke. Okay. And that's what I want. And then they have their own talk rooms. They go on Zoom and they talk. So overall, it's the ecosystem. Okay. So I just wanted to share it with you. I hope you liked it. So, and if you have any doubt, anything, this is our number, 96483. You can always ask us by sending a message. Please send us a message, WhatsApp message. We'll respond to you. Okay. So I'm going to stop sharing now. Okay. I won't talk about it. Now I want to talk to all of you one by one. Okay. So as I promised you that I'll be talking to you today, we have a lot of people though. And so anyone who has got a question can ask a question here. Okay, आप में से कोई भी कुछ भी सवाल पूछना चाहता है इंग्लिश के बारे में, तो वो अपना सवाल पूछ सकता है. Okay, yeah, one by one. So who would like to ask? Yeah, go ahead. Anyone can ask. Parimala. Hello. Yes. Go ahead, please. Hello, sir. Hello. Actually, is this course useful for kids? Means I'm searching for 2 years, 5 years, 8 years. No, I would always recommend. Actually, we have a course for kids also, by the way. Okay, but that's not for that young kids. So there is a way out. Actually, we have a lot of parents who have taken courses for themselves and they teach their kids, and that is the best way. Yeah, so what's my question? If I take this course, yeah, is I'm capable to teach our kids? Absolutely. If not, is there any particular course for kids? No, this is the course actually. So just you said you are planning for kids course also. So we have a kids course, by the way, but I would still recommend you that if you take a course and you get trained, you can teach any kid. Oh, okay. Okay, so I would recommend this course. Okay, the other course is also of the same price. So for us, it does not matter, but I would very strongly recommend that you take this course and then start teaching kids. By the way, teaching others is a wonderful method of learning anything. I actually learned more as a teacher than as a student. I learned a lot as a teacher. I started teaching when I was not perfect. So my teaching actually, so what I used to do, I used to copy my teacher. Okay, what he would teach. I had knowledge, but how to deliver that knowledge? And that's what you can always learn. Okay, so I would recommend Parimala ji that you take the course and then you teach the kids.
Oh, okay. And the next question, just next one is what? Oh, sorry, I just forgot what you No said. problem. No problem. You can anytime you can ask. You can write Yeah. your question, you can ask. Okay. 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 And if you have any issues, you can write it on 96483 96483. That's our number. Okay. Yeah. Great. Yeah, anyone who would like to ask anything about the course, about English, or maybe there's something which is bothering you in your life, something which is stopping you from becoming maybe big. Okay, maybe you think yes, it is your thought pattern, thought process that needs some kind of brainwashing and all. So you can ask anything. Sir, yeah, just how much its lifetime means Yeah, period yeah. of time. Right, right. So the course actually the duration is Parimalaji, it is for 6 months. Okay. Okay. So we expect actually the learners to finish this course in 6 months. But by the way, we don't stop the validity. I'm saying it openly because we have a lot of students who are a part of our community here. Like Mamta is here. I can see Mamta here. So Mahavir Singh ji Yes, is sir. here. Yeah, Mamta is here. So they Yes, know good you. evening, sir. Good evening, Mamta. Nice to see you here. So they are the paid students actually, and they know me very well that how much we give back to them, and we never stop the validity. By the way, so Mamta is a very Mamta. How long you have been there on the platform now? Sir, it has been 1 year. It has been 1 year now. So the official validity is 6 months, but once you are my student, you're a student for lifetime. It's like that. Oh, Yeah. okay. That's my question. Yeah, but I never say it lifetime validity simply because I want you to learn fast. Oh, okay. Yeah. Okay. I would also And Once suggest your you, phone ma'am. number, please. yeah, Mamta, please. Yeah. Yeah, Sir, yeah. I would like to say, ma'am, because I have experience, Yeah. what I have learned from you. Yeah. Sir, Yeah. Mamta, I'll give you example of Mamta actually. When Mamta came Also. to, yeah. So when Mamta came to us, Mamta was quite hesitant actually, and it's not with Mamta only. It's Mamta has got a very good friend in Sangeeta Palkar, by the way, who is also here. Okay, and today both of them actually online. Mamta, you are in Gurgaon, I think, and Sangeeta Yes, is sir, I am Gurugram. I am from Gurugram, Gurugram, sir. and Sangeeta Yes, is sir. from Karad, Karad, and yes, sir. both of Sir, them, both are yeah, yes, sir. Mamta. So Yeah, one day yeah. I got a call from side of Sangeeta ma'am, and she want to know how to join academy. And that Okay. time she don't know how to take class on academy channel. That Yeah. time she some find my number from somewhere, and then she Okay. called me and she told me, can you Yeah. tell me, ma'am, how to join academy Yeah. app? Then I told her, and from that day we talk every day. Absolutely. One every And day. that's Mamta, that's what I say. This is ecosystem. This is what I call ecosystem. So what is ecosystem? There is no teacher, so they are part of the ecosystem, means it actually multiplies. So there is no teacher between Sangeeta and Mamta, but they talk daily. They became Yes, sir. the best friends. And I would like to inform you, Yeah. tomorrow my husband granny was no more, but Okay. I want to attend your Zoom Yeah. webinar. That's Right. why I can't stop myself, and I join your webinar. Yeah, And yeah, I yeah. did your assignment also, tomorrow assignment Okay. also. Okay. Thank you so But much. I was very busy, but in spite of being busy, and I Yeah. did my work. But Right, it is right. my priority. Absolutely. And Yes, that's what I say. thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot, Mamta. And the point I want to make it to everyone is, you see, be it here or be it anywhere else, English is a language, and a language comes through ecosystem. So you build an ecosystem here, you build an ecosystem outside. मैं तो हमेशा आप लोगों को ये कहता आया हूं कि आप अपने आसपास ecosystem बनाइए, and it is present. You can do that. We are helping many people actually inside the community build an ecosystem. Okay. Yeah. Anyone else? Anyone else who wants to say something or I ask? want your contact number. Acha, my contact number is 96483 96483. You repeat it. 96483 96483.
96483 96483. Yeah, 96483 96483. So it's quite Very quite good easy. number, sir. Yeah, Yeah, yeah. okay. We have got a whole series of that. We don't tell that, by the way, but that's the number that you can use. Okay. Yeah. Anyone else? Acha, how many of you? I would like to ask you if you are not asking. Yeah, somebody wants to ask. Shala, you want to ask something? Or Shala, you're yeah. I'm a big fan of you, sir. Thank you so much. Shala, where are you from? I'm from Rajasthan Talk. Acha, you're from Rajasthan. Okay, okay. And Shala, for how long you have been following me now? I think for 5 months. Okay, okay. So, Shala, have you started learning English now? Have you started your journey of English? Yes, sir. I know English. I'm an English teacher, but I hesitate to speak. Yeah, yeah, yeah. So that's you're from. We have a lot of teachers, by the way, from Jaipur. Okay, who are part of our community, and they're doing great. Yeah. So I would request you one thing, Shala, and everyone else who are teachers here. Okay, who are teachers here. I think as teachers, we have a lot to give back to society. Okay. So what you can do is you can go to level next. Okay, get to level next and start contributing, start giving it. Yeah. Lack Yeah. of confidence and Yeah, yeah. no any other person with whom I can talk. Okay, Shala. So Shala, you said you are a teacher. Yes, sir. Okay, and do you have co-teachers also there in your school? S- You have teachers who are teaching there in the same school? yes, sir. I'm a government teacher. Yeah, yeah. So no problem. Even if you are a government teacher, so you might be having somebody around. Actually, you need to find out, is there anyone? Acha, how far is your school from? How do you commute? You commute through public transport or personal transport? 16 kilometers, sir. Okay, and you go by bus, train, or your own vehicle? Scooty. Okay. Yeah. But if somebody is going by public transport, then it becomes much easier. And if you have got a partner, I learned a lot by that actually. So what you need to do, Shala, you need to find out somebody. You need to find out somebody with whom you can partner. One who wants to learn English. That's the one way. The second way can be, Shala, you can find out somebody. Yes. Like you can talk a little bit of in English. So you can find somebody that wants to learn English. So you can teach him or her and try to speak in English to them. So you can do that. And the third thing can be you can join our community. We have a lot of people here and they talk among them. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Shala, your voice is cracking. I have already purchased. Okay. Thank you so much. Yeah. Yeah. Anyone else? Hello, sir. How are you? I'm fine. Shama, how are you? I am also fine, sir. Where are you? I am from Jharkhand, sir, but I live in Gujarat now. Okay. Yeah, Shama. You want to say something? Yes, sir. Yes, sir. I study in class 7, sir, but I attend your class daily. From start, I don't understand. I can't able to understand, but slowly I understand. That course of 5 days, I have making video and you admire me. Yeah. I saw your video. You did very well. And Shama, I really feel so blessed that we have been able to make some contribution to people like you. Okay. And somebody who has got resources and can go to English medium schools, that's fine. But people like you, Shama, that's great that you are talking in English. Okay. Keep up the good work. Sir, I talk with English in my home also, but my mom don't understand. So No I problem. try to make understand them. Slowly, my father has also learned to speak English. Aha. That's great, Shama. Very good job. I think, Shama, you'll be able to speak English very well. Okay. Sooner than later. Just keep up the good work.
Yes, sir. Thank you, sir. Thank Sir, you. I have a confusion that transitive verb and intransitive verb. How can I identify? Okay, I'll teach you there in the class. Now here, because we are talking about the light topics, I'll definitely keep myself to that. But transitive and transitive I've taught there. I'll teach you again in the class. Okay, on YouTube. Okay, thank you. That day you admire, sir. I got very excited and I feel that I will speak now. How will I speak now? Keep speaking to yourself. Okay, keep talking to yourself. You are your best partner. Okay. My brother has also helped me, sir, in this. Yeah, Because that's my great. brother is also study with me. That's great. That's great. So thank you so much, Shama. Thanks a lot. Keep up the good work. Okay. Yeah. So we have some other people also want to talk. Yes, somebody raised the hand. Yeah. Anyone else who would like to say something? Okay. Yeah. I would like to ask you, every one of you, is there anyone who came here for the first time, like not here, but who either on YouTube or here you're meeting me for the first time? Is there anyone here? No. So I would like to say you something. Okay. Now you have a job in your hand. I would request you all. We have so many people here. I would like to make this request personally to all of you. Please talk about our work to other people. There are a lot of people actually who want us. And why I started this revolution, I started it simply because I wanted to contribute. We have been able to contribute to a bigger level, much bigger level, but I think we can still do more. Okay. We have so many people who come to our classes, but still there are thousands and thousands of people who still need us. So I would request you, please spread our message wide and across. Share our classes, ask them to come to live classes, ask them to, and we don't charge anything on YouTube, by the way. Okay. And those who can afford, please come to our community inside. You would enjoy that. It will change your life. It's not your English. It will change your perception about life. So I always say we shouldn't be cheap on the way to greatness. So even when I did not have much money, I used to buy books because I invested heavily on books, heavily on books. I never invested on mobiles, on televisions, on gadgets, never. I invested heavily on books. I invested heavily on knowledge. Wherever from I got skills, knowledge, I would take that. And I would give the same message to you, number one. The second thing is, people who can't afford, please either you teach them or send them to us, to our classes. We will teach them. So you can do two things. Either you contribute, you can teach them, or if you can afford, come to us, like be a trainer and go and teach them. So anyways, it's going to contribute, it's going to change the society in a big way. We have people from outside the country also. We have Danish here, who is from Pakistan. And I always tell them, he's also part of our inside community, by the way. And I always tell people like Danish, Danish, you as a young person, if you can understand and if you can learn this here, this art of teaching, number one, English, then art of teaching. So you can really bring a tremendous change in society. And we owe it to our being, our existence. ये हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम कुछ ना कुछ दें. हमने बहुत कुछ लिया है सोसाइटी से, अब हमारी बारी है हम दें. तो अगर आप दे सकते हैं तो अपने आसपास खूब बांटिए. ओके, जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, जो आप कर सकते हैं आप करिए. अगर आप वो नहीं कर सकते, हमारे पास भेजिए. ओके, एंड विल टीच देम. Yeah, anyone else? Otherwise we'll close the session. Okay, I've given you my number 96483 and if you have anything that you want to talk to, you can always talk to me. Okay, and if like you have any question on courses, we can arrange a short meeting also. Okay, so we'll explain everything about that because I generally don't explain much here. मैं बहुत ज़्यादा explain नहीं करता हूँ. I keep it very private. Okay, that's how my community has grown. Yeah, so Mahavir Singh Yes. is another one. May I, sir? Yeah. Please. Thank you so much, Mahavir Singh ji.
Mahavir Singh ने भी लिखा है कि he is part of the community and has learned a lot. Thank you so much. Yeah. Yeah, somebody wants to say something. Yes, Yeah. sir. One by one. Sheetal, acha. First of all, Sheetal wants to say something. Yeah, Sheetal. Yes, sir. I have a question. May I ask? Yeah, sure. Go ahead. Sir, like you say that build community and talk in English with your friend. But if I am weak in English and my friend is also weak in English, then how can I know that whatever I say is right or wrong? So what was our second point, Sheetal, today? What was our point number 2? Our point number 2 was autocorrection. You would be surprised that most of the knowledge that we get is not delivered to us. We'll learn through nature, how birds learn, how animals learn, how we learn, how a child learns to talk. He does not go to school, but he learns a language. Yes, sir. Yeah, he is incorrect. और मजे की बात यह है कि जब बच्चा गलत बोलता है ना ग्रामर, तो माँ भी ऐसी बोलने लगती है गलत ग्रामर. वो उसको ये नहीं सिखाती बेटा सिंटैक्स, जैसे हम आपको ट्रांसक्रिप्ट इंट्रांसक्रिप्ट पढ़ाते हैं, ये सही है ये गलत है, वो ऐसे नहीं सिखाती. एंड दैट्स द नेचुरल वे. योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू स्पीक. द सेकंड थिंग इज टू स्पीक रॉन्गली, एंड द थर्ड थिंग वुड बी स्पीकिंग करेक्टली. और वो जो थर्ड है वो अपने आप हो जाएगी जब पैशन आएगा. सो पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन करेक्शन. आई ऑलवेज से दैट. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको नहीं आती उनको नहीं आती. जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग and you will learn yourself. Autocorrection is a wonderful method. It's a very powerful tool that people ignore. Yeah. Okay. Yeah. Okay, Nuruddin wants to say something. Somebody else also wanted to ask something. किसी और ने भी कुछ मुझे लगता है पहले युवराज कुछ कहना चाह रहे थे या Nuruddin. Okay. Yeah. So Nuruddin, can I talk to Yuvraj and then I'll talk to you? Yeah. Yes, sure. Yeah, Yuvraj, please go ahead. Sir, how many years you took to learn English? I will tell you when I will learn English. I'm still learning. So Yuvraj, I always say never measure it in months or years. You measure it by passion. Yeah, I'm so passionate about English that till my last stage I would be learning English. जहां तक बात है कम्युनिकेशन की, मुझे ये लगता है कि मैं 6 महीने के अंदर कम्युनिकेट करना मैंने शुरू कर दिया था. गलतियां करता था, लेकिन 6 महीने मुझे लगे थे. 6 months I started communicating. But then जब मुझे इकोसिस्टम मिला, जैसे मैं जब कंपनी में गया तो बहुत तेज ग्रोथ हुई क्योंकि वहां सब इंग्लिश में बात करते थे. इट्स ऑल अबाउट योर इकोसिस्टम. आप कितनी जल्दी उस इकोसिस्टम के करीब आते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, मच मोर इम्पोर्टेंट. या सो युवराज, मैं आपसे कहूंगा आप जैसे लोगों से कि बिल्ड दैट इकोसिस्टम. व्हाट इज योर एज युवराज? आपकी एज क्या है? Sir, I am 14 years old. 14 years of age. Yuvraj, I'm really happy the way you made your video and the kind of editing you did on that. I really liked it. मुझे बहुत अच्छा लगा. Okay. So that means you are passionate about both the things. You are passionate about video making. You are also passionate about English. आपने जैसे वो, जबकि हमने आपसे कन्वर्सेशन के लिए नहीं कहा था, लेकिन आपने कन्वर्सेशन किया अपने दोस्त के साथ. Okay. That's good thing. So you have passion for it. Okay. तो ये पैशन आपके बहुत काम आएगा. ओके. सो मेरा पैशन तभी जगा था, थोड़ा उसके बाद जगा था इंग्लिश को लेकर जब मुझे झटके लगे, लेकिन अच्छा है आपका पैशन इस समय जग गया. तो आप वीडियो गेम से दूर आकर इन सब चीजों में लगाइए. यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. ओके. व्हाई आई एम सेइंग वीडियो गेम, युवराज? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन योर एज, आई डोंट नो व्हाट डू यू डू, they go closer to video games than to books. Okay. So you put your passion there. Yeah, good. I liked it. Nuruddin, please. Yes, sir. Yeah. Sir, first of all, how are you, sir? I'm fine. How are you, Nuruddin? Where do you belong to, Nuruddin? Sir, actually, I am from Kolkata. You're from Kolkata. I remember because I wrote your address when I was like sending your book. Yes, sir. I got the book today. Yes. Thank you. Acha, you got the book today. That's great. You got the second copy now, I think. Yeah. It is my second copy. Yeah. Actually, I want to give the book to my brother actually. Okay. What does he do? See, he is studying in class 12. Acha, he's in class 12. So ask him to talk in English, learn from the book and talk in English. The important thing is make him talk in English. Okay.
Yeah, Nuruddin. So yeah. So actually, sir, my question is to in general the success and failure related. So sir, you tried something in the past, but it's failed miserably. Yeah. So in this situation, how do you tackle this situation? Those situations. So Nuruddin, actually, first of all, it's not about success and failure per se that changes you. It is your perception about success and failure. How you perceive success, how you perceive failure. So I was talking in one of the classes. I take classes on different platforms. So in one of the platforms today, the topic was how to attract success in life. और मैंने इसमें एक अब्राहम मास्लो ने एक बहुत बढ़िया कोट मुझे याद आई तभी, तो मैंने उनको एक कोट बताई जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा. He said, what a man can be, he must be. तो उनके लिहाज से सक्सेस की डेफिनेशन बस इतनी है. मैं रिपीट करूंगा इसको. What a man can be, he must be. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है किसी चीज को करने का, पहले तो आप उसको रियलाइज कीजिए ये मेरा पोटेंशियल है, और उसके बाद अगर आप कर लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, वही सक्सेस है. तो अब जब आप उसको हासिल करते हैं तो वो एक बार में हासिल नहीं होती, उसके स्टेप्स हैं, और उसका एक बहुत बड़ा स्टेप है मल्टीपल फेलियर्स. एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस. पर्पस टेक्स अ मच लॉन्गर टाइम. तो जब आप अपने गोल को भी अचीव करते हैं तो उसके बीच में भी फेलियर आते हैं. बाय द वे, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, इट्स ओनली एन एक्सपीरियंस. वी हैव नेम्ड इट फेलियर फॉर आवर कन्वीनियंस. हमने अपने कन्वीनियंस के लिए उसका नाम रख दिया फेलियर. फेलियर नाम की क्या चीज होती है? कुछ नहीं होता, ये एक्सपीरियंस है. ये हमें बार बार कह दिया गया, बता दिया गया, बेटा ये गलत होता है, तुम फेल हो गए. फेल, और ये कॉलेज सिस्टम में ज्यादा हुआ है, जहां पर हमें कॉलेज में बार बार ये बताया गया फेल होना अच्छी बात नहीं है. ये सबसे खराब शिक्षा है जो हमने अपने बच्चों को दी. मुझे लगता है आज भी हम कहते हैं, लाइक हम अपने बच्चों को जब मैं कहता हूं तो मैं उनको ये नहीं कहता कि बेटे कितने मार्क्स आए या तुम्हें ये करना चाहिए. आई वुड ऑलवेज से व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, कि अच्छा तुमने ये नहीं किया तो तुम अब क्या करने जा रहे हो. सो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ इट. सो अगर मैंने कुछ पार्ट पास्ट में किया और उसमें मैं फेल हुआ, सो माय मीडियम में चेंज, माय रूट में चेंज, बट माय गोल रिमेन्स द सेम, माय पर्पस रिमेन्स द सेम. I have failed in more things than I have succeeded in. मैं ज्यादा उसमें फेल हुआ हूं बनिस्बत पास होने. और यही सफलता की निशानी है. सफलता की निशानी सफल होना नहीं है. आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं सबको, आप इतनी देर तक यहां रुके इसलिए. सफलता की निशानी है आप कितनी बार फेल हुए. जो जितनी ज्यादा बार फेल हुआ वो उतना बड़ा सफल इंसान है. क्योंकि जब आप जल्दी फेल हो जाते हो इसका मतलब आपने अपनी एबिलिटीज, पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट किया. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने आप को एक कंपनी में एक छोटे से ओहदे पर जाकर सफल मान लेता हूं तो मैं फेलियर हूं. लेकिन मैं उसी कंपनी में आगे बढ़कर टॉप पर जाकर उस कंपनी में से रिजाइन करने के बाद फिर कुछ नया शुरू करता हूं 15 साल के बाद, और फिर फेल होता हूं और फिर बड़ा बनता हूं, तो मैं सक्सेसफुल हूं. And that's what I say. That's how you need to understand the difference between success and failure. And there is nothing called failure, by the way. Okay, it's only that fail means you fail only in your first attempt, and that's your first step of learning. Okay, that's your first attempt in learning. I want to add one more thing here. So actually, as you mentioned earlier in this class, sir, you have referenced some books here, The Think and Grow by Napoleon Hill. I have read the book. Yeah. So in my experience, so what I was thinking that time, so I have failed miserably in the past. Yeah. So because the Napoleon Hill actually quoted that, though always believe in your decision. So your decision, or if you do not believe in your decision, then you could not succeed in your life. Absolutely. So that point I couldn't rectify my failure. What I did wrong in the past. So after that, but when I read the book, then I was trying, and I'm still trying to succeed in my life. Absolutely. So that's what I say. Actually, you see, learning is a very good teacher. In fact, the only thing is you should be ready to be a student.
Failure. Failure is a very good teacher. The important thing is you should be ready to be a student. So most of the time, we don't try to be a student. We try to be a boss. And we try to be educated. We say, we can't fail. ऐसा हो ही नहीं सकता. But you say, I can fail, I can learn, I can fail, I can learn again. And then I can succeed. Okay, it's all about perception. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Noruddin. Thank you. Hello, good evening, sir. Yeah. Good evening, Shilpa. How are you? I'm fine. How are you? Sir, now I am in a bus. I am in the bus, sir. You're traveling. Yeah. Now I am going to home, sir. Okay. After completion of studies. Yes. Okay. I hope though there is some disturbance, but you were there in the whole webinar? Yeah, yes, sir. Okay. I hope you learned the lesson. Yeah. I really like it the way. I'm very impressed with your. Thank you so much. I'm very impressed with your way of teaching and the strategies you adopt. Thank you so much. Sheikh Sadika. Thanks a lot. Thank you, sir. And we do it only for girls like you and people like you, okay, who really are hardworking and who need us. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. All the best. Thank you, sir. Happy journey. Take care. Okay. Great. Yeah, Danish, your voice is cracking, but I think there is some network issue. Good evening, sir. Good evening, Jyoti. Good evening. Sir, I want to ask. Yeah. Some people say you can't. Then what if we lost our motivation? So when some people say you can't, okay, you lose your motivation. Yeah, that's what you want. Okay. Yeah. Okay. Danish, there is your side. I think you need to mute yourself again. Okay. So Jyoti, I'll tell you one thing. See, people have different perception about you and about themselves. Okay. So what you think about yourself, about your goal, people don't think the same way. So be it my mother, be it anybody very close to me, it's not their fault. It's the fault of the perception. So if you think your perception about yourself and what you think about that particular thing is absolutely correct, you should not even listen to that. So what is the way out? The way out is put a filter in your brain. So first of all, what are the few things that you would allow inside your brain, okay, that you should decide. So if there are things like, if my neighbor tries to throw some trash in my home, in my house every morning, would I allow that? I would not allow that. So if I think this is trash and I should not allow it in my temple, which is brain, then the job finishes there. I would say, okay, there's a filter. You try to throw it, nothing will happen. It will bounce back. Okay, so you tell yourself, what do you require? You require a can attitude or can't attitude. So it should not be their choice. So my life should not be their choice. That's it. You need to, and I told it to myself when I left my job. A lot of people actually mocked me in my company itself. What are you doing? After getting so much of success, because I was quite successful in the company. For them, success was being at a particular position, earning so much of salary, having a good lifestyle. That was success. For me, my perception of success was different. How can they understand this? So I forgave them. तो मैं उन्हें माफ किया करता था कि ये क्या जाने सक्सेस किसे कहते हैं. अब हो सकता है वो मुझसे ज्यादा आज भी कमाते हो, लेकिन उनके लिए सक्सेस वही था. मेरे लिए सक्सेस ये है जो मैं अभी कर रहा हूं. अगर मैं आप में से एक या दो की भी जिंदगी को चेंज कर दूं, आई एम सक्सेसफुल. Now that's actually, this is what I say, it's my life. I need to decide what is my perception about life. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Praful, you want to talk? You want to ask something? Or you have raised your hand earlier? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Praful. Yeah, go ahead. Myself, Praful Kumar. I belong from Patna, Bihar.
Okay. But currently staying in Gandhinagar, Gujarat since 2012. Okay. And Okay. working in MNC company right now Okay. as a supervisor. I have only 10th pass, sir, and ITI diploma. अच्छा, अरे वाह, Yes. great. तो आपका सर ये आइडिया बहुत अच्छा है इंग्लिश सीखने का इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे मतलब कि मैंने तो गूगल में ये यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे हैं, ये कर लो वो कर लो, ये स्टेप है इसमें से, ये क्या बोलते हैं कैप्सूल है घोल के पी जाओ, ये वो सब कुछ नहीं होता सर, वो बोलने से होता है। हमने तो एक वर्ड भी इंग्लिश में ही समझ पाता था जब मैं यहाँ पे आया था जॉब करने के लिए। लेकिन ये क्या है इन्वायरमेंटल मिला, उसके लोग बोलते गए तो थोड़ा थोड़ा कैप्चर करा। तो मैं सर इस पे ये सजेशन था, इसका आपका आइडिया बहुत अच्छा है जी। तो इस पे एक सजेशन था सर, इस प्लेटफॉर्म पे हम वो ग्रुप बनाए लोगों का जो मेंबरशिप होगा। ऐसा नहीं है कि फ्री का कुछ नहीं होता सर, क्योंकि फ्री में हम किसी को कुछ भी देना तो उस पर मेहनत नहीं करेंगे ना, उस पर उतना केयरफुल करेंगे ना वर्कआउट करेंगे, बस लगेगा फ्री का है ना, ठीक है यार दूसरे चैनल पे देख लेंगे यार, उस चैनल पे देख लेंगे, बहुत बहुत सारा चैनल है। तो जस्ट मेंबरशिप टाइप को, और एक आपका असाइनमेंट हो, जैसे आपने 2 दिन में आपका 2 दिन 3 दिन से देख रहा हूँ वीडियो, तो उस पे मतलब 3 दिन से ही देखा हूँ आपका, उसके पहले तो मैं कभी देखा नहीं कुछ भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा मेंबरशिप जैसा होगा आइडिया, और आपका असाइनमेंट होगा, और हफ्ते में एक दिन 2 दिन जितने भी लोग रहेंगे वो उस पर बात करेंगे टॉपिक पे, और आप सिर्फ लिसन करेंगे उसको, और आइडिया देंगे कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होगा ऐसा बोलो। तो उसमें सर मेरे हिसाब से ज्यादा वो होगा, लर्न करेंगे जल्दी, सीखेंगे जल्दी। Yeah, so Praful, actually that's what we do in our inside community. Now the problem is, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं YouTube की, उसमें एक YouTube में क्राउड होता है। Okay, so what we do is from that crowd, so I give them a lot. अगर आप मेरी YouTube की वीडियो देखें तो हम YouTube में बहुत कुछ देते हैं। Okay, और हम बहुत ऑनेस्टली देते हैं, मतलब हम उसमें ये नहीं करते कि हम ये YouTube है ये इनसाइड कम्युनिटी है, लेकिन वहां पर हम एक्टिविटीज नहीं कर पाते। हमने करने की कोशिश की बट इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली इस तरह की एक्टिविटीज कर पाना रेगुलर लेवल पे। इंपॉर्टेंट है सर, वो चीज इंपॉर्टेंट है। हम सो लिसन टू मी फर्स्ट, सो लिसन टू मी फर्स्ट। So what we do is like we have an inside community there, और उस कम्युनिटी में हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और वो ग्रुप जो है वो सिर्फ ऐसे होते हैं कि जैसे 5-6 लोगों के ग्रुप हैं। जैसे यहाँ पर हमारी अभी 1-2 लोग हैं यहाँ पर, तो वो उनको मालूम है कि वो उस कम्युनिटी के मेंबर हैं, उस ग्रुप के मेंबर हैं, और वो अल्टरनेट डे पर उनकी मीटिंग होती है। ओके, उसमें हम उनको टॉपिक देते हैं, दे डिस्कस द टॉपिक, एंड देन आई ऑल्सो गो लाइव देयर सेपरेटली, and then we discuss, and that's how they learn. So the point is actually whatever we can do in our limited resources, we are trying to do it. Outside it is very difficult to do that. Okay, so that's why we have formed this community. ये हम पहली बार कर रहे हैं एक्चुअली, जो भी कर रहे हैं। So इसमें से कुछ और चीजें जो निकल कर आएंगी, we'll try to do that, but we actually any which way जो हमसे मैक्सिमम हो सकता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। But your suggestion is good and we'll definitely take notice of that. Yeah. Okay sir, thank you. Thank you so much, thank you. Anyone else, or we say good night? So first of all, thank you so much for being here for so long, and I hope you really enjoyed it. You enjoyed the whole meeting, but the important thing is what you learned, please try to apply that. Okay, enjoyment is one part of it. The next part is application. So मैंने आपसे 2 चीजें कही थी जो आज आप करेंगे, एक डिसीजन लेंगे और एक एक्शन। तो अगर आप दोनों चीजें लेना जान गए जिंदगी में, एंड देन ऑफ कोर्स यू मे फेल आल्सो, यू मे टेक, जब रतन टाटा से पूछा गया कि हाउ डू यू टेक राइट डिसीजन एवरी टाइम, तो उन्होंने कहा आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन कन्वर्ट माय डिसीजंस इनटू द राइट वन, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. बाय द वे, वी हैव shortlisted your names for the prizes. As I promised you, we will give it on YouTube, so we'll give it to you tomorrow. कल 9 बजे हम आपके जितने भी प्राइजेस हैं वो हम सारे के सारे डिक्लेयर करेंगे। लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा। ओके, तो कल वहां पर होंगे तो कल जरूर आइएगा, और कल YouTube पर हम आपको आपके प्राइजेस बताएंगे किस किसने क्या क्या जीता है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस बूट कैंप, आपको अच्छा लगा होगा, और लोगों को हमारे बारे में बताइए। ओके, सो इट वाज ग्रेट मीटिंग ऑल ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू. Hello. Thank you, sir. Hello. Thank you. Thank you sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir. Bye bye. Good night. Bye.